students, so this is your textbook. Now let us move ahead and see the reduced part of your syllabus. So from the first chapter, we have, okay, come to page number 2. Page number 2 का जो salt example है, this one is not there in your syllabus. Next is page number 3, salt example 2 is also reduced. Salt example 3 is the part of your syllabus. We have to do this. So after we complete practice set 1.1, we are going to discuss this sum. Okay. So always remember practice, salt example भी बहुत important होता है. उससे भी we can expect sums in our board exams. Okay, so moving ahead to practice set 1.1, question number 1 is not part of your syllabus. Then question number 2 also, you only have question number 7 and question number 8. ये दो sums ही है, which means 1 से लेके 6 sums हम लोग को नहीं करना. So एक साथ मैंने इसको cross डाल दिया. Okay, which means you only have to do 7 and 8. So basically from practice set 1.1, you just have 2 sums to solve. Clear everyone? So in today's video, we are going to cover these 2 sums plus the solved example which I have mentioned before. Okay. So yeah, let's get started. So if you check 7th और 8th वाला sum, इसमें क्या अलग है देखो. यहाँ पे क्या है 99x and we have 99y for the second equation. Then we have 101y, 101x. तो दिख रहा है x और y actually जो coefficients है वो interchanged है. Same goes with 8th sum. 49x है, यहाँ पे 49y है. You have 57y here and we have 57x here. Right? So again the coefficients are interchanged. तो जो तुम्हारे सिलेबस में अभी है तो ये सब इंटरचेंज कोएफिशिएंट्स वाले सम है. सो फॉर सॉल्विंग दिस वी हैव अ डिफरेंट मेथड. लाइक मेथड इज द सेम बट देन उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर हम फॉलो करते हैं. वो क्या है उसको देखते हैं. कम ऑन. ओके, सो एज आई सेड हम एक पर्टिकुलर मेथड को सॉल्व करने वाले हैं एंड द मेथड इज एएसए. एएसए मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड. कैसे सॉल्व करेंगे? एएसए कसा अस्सा. ओके, सो क्या करने वाले हैं? लेट अस सी सर्टेन स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो. स्टेप 1, गिव नंबर्स टू द इक्वेशन. एज यू ऑल नो सम में 2 इक्वेशन दिया रहेगा. वी नीड टू गिव नंबर्स. पहला वाला फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा वाला सेकेंड इक्वेशन. सिंपल. सेकेंड स्टेप is to add the given equations. तो हमारा first and second equation है, we just have to add the equations and then after adding the equation we are going to get a new equation. Okay, so that is equation number 3. वो कैसे करना है when we start solving the sum तभी मैं तुम लोग को डिटेल में बताऊंगी. Now third step is to subtract the given equations. मतलब हमारा जो इक्वेशन 1 और 2 है उनको क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो जैसे स्टेप 2 में हुआ था कि आफ्टर एडिंग वी वर गेटिंग थर्ड इक्वेशन, सिमिलरली हियर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी आर गोइंग टू गेट अ फोर्थ इक्वेशन. तो क्या करेंगे? उसका फोर्थ स्टेप में उसका यूज होगा एडिंग द न्यू इक्वेशंस. एडिंग द न्यू इक्वेशंस मींस एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दीस सम्स, नाउ व्हेन अभी हम जब सम को सॉल्व करेंगे तब हमें डिटेल में पता चलेगा कि इसका यूज कैसे होता है, प्रैक्टिकली कैसे चलता है इसको. तो ये याद रखो, whenever you see such magic numbers, what we are going to do? We are going to use ASA, add, subtract, add. So let us start with the first sum, that is sum number 7, because 1 से 6 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. तो 7th sum is 99x plus 101y equal to 499 and 101x plus 99y is equal to 501. So ये तुम्हारा sum है. So what was the first step? First step was to give numbers to the equation. So ये equation 1, equation 2, easy.
Second step is to add both the equations. So adding equation 1 and 2, we get, so क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को लिखना है, and then let us use a plus sign over here which denotes we are adding these equations. So let us add. What is 99 plus 101? It is 200. 101 plus 99 again gives you 200. 499 plus 501. Okay, 500 plus 500. Okay, 1000. यहाँ पे एक extra 1 है. यहाँ पे 1 कम है. So it is 1000. So 200x plus 200y is equal to 1000. Now this equation is bit complicated. So इसको हम क्या करेंगे? Simplest form में लिखेंगे. Okay, so if you check, मुझे सिर्फ x चाहिए, मुझे सिर्फ y चाहिए, so मुझे ये 200 को निकालना पड़ेगा, right? So what I'm going to do is I'm going to divide both the sides of the equation by 200. So let us see how to divide. So इसको divide करेंगे तो ये this is just for calculation basis. 200 gets cancelled, 200 gets cancelled. Now 200 ones and 200 fives is going to give you 1000. If वो समझ में नहीं आता है, let's say 0 कट किया, so we are left with 10 upon 2. So 10 upon 2 is 5. Na? 2 ones are 2, 2 fives are 10. Right? I hope this is clear. Now, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा? x plus y is equal to 5. So as I said, after adding the equation, we are going to get a new equation, and that is equation number 3. Clear? Now what is the next step? We need to subtract these two equations. Which equations are original ones? 1 and 2. तो इसको हम subtract करेंगे. तो when we are subtracting the equation, हमने lower standards में भी पढ़ा था, whenever we subtract, the signs are going to change. So I'm going to change the signs here. अभी 101 is having no sign, which means it is having a positive sign. So we are going to change the sign to minus. 99 is having a positive sign, so I'm going to write minus here. 501 is not having any sign, so again I'm going to use a negative sign here. Okay. So 99 minus 101. 99 is a smaller number. उसमें से मैं 101 से minus कर रही हूँ. So your answer is going to be negative, right? 101 minus 99 is 2. बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस कर रही हूँ. So 101 minus 99 is 2. 499 minus 501. अभी यहाँ पे स्मॉलर नंबर को मैं माइनस कर रही हूँ बड़े नंबर से, छोटे नंबर से मैं बड़े नंबर को माइनस कर रही हूँ. सो अगेन यू आर गोइंग टू गेट माइनस. सो इसका आंसर क्या आएगा? -2x plus 2y is equal to -2. क्लियर है? नाउ अगेन जैसे हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया था, द सेम वे वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई हियर. सो इफ यू चेक, x is having a coefficient 2, so I want to remove that coefficient. So what we are going to do? Yes, we are going to divide both the equations, both the sides of the equation by 2. So let us see the calculation part. So what I'm going to do, यहाँ से 2 कट हुआ, क्या बचा? -x बचा, 2 gets cancelled, सिर्फ y बचा, यहाँ पे भी 2 gets cancelled, so माइनस कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, right? -1 बचा. So let us see further. So -x plus y is equal to -1. So this is equation number 4. Right? So what is our fourth step? Fourth step is to add third and fourth step, new equations. So we are going to add equation 3 and 4. तो लिख देते हैं equations को, and let me add a plus sign to it. Okay, now what will happen? Just check. X minus x, एक positive x, एक negative x है, क्या हो जाएगा? Cancel हो जाएगा. Plus y comes to 2y. And 5 minus 1 is 4. So answer is 2y is equal to 4. अभी मुझे y का value चाहिए. So I'm going to transfer this 2 to this side. So here 2y का मतलब है 2 into y, right? 2 multiplied by y. So when it comes to this side, other side of equal to, it gets divided. So y is equal to 4 upon 2. So y is 2. So we have got the value of y. Now how to get the value of x? We are going to substitute this value in any of the equations. There are 4 equations, right? कोई भी एक equation में तुम substitute कर सकते हो. You are going to get the same answer.
So I'm going to substitute in equation number 3 because equation number 3 is very easy. You can substitute in equation 4 if you want. You can substitute in equation 1 or 2. Any equation, it is going to give you the same answer. It doesn't matter. तो ये है हमारे इक्वेशन को वापस से नीचे लिख दिया एंड देन आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट 2 इन प्लेस ऑफ y एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. सो यहाँ पे +2 था, सो इफ आई टेक दिस टू द अदर साइड इट गेट्स -2, so x is equal to 3. So we have got the answer, y is 2 and x is 3. We have got the solution. Now after getting the solution, if you want to check whether your answer is correct or no, क्या करना है, कोई भी इक्वेशन, 4 इक्वेशन में से भी कोई भी इक्वेशन को उठाओ and then you need to check whether it is satisfying the equation or not. We have learned, we know na equation के दो sides होता है, left hand side, right hand side. So if you check that, you will understand whether it is correct or no. So y2 है, x3 है, तो 2 plus 3 is 5, so it is satisfying the third equation. If you want, you can check in this also. Minus x, right? So -3 plus 2. What is -3 plus 2? Different sign, subtract, use the sign of the bigger number, -1. I hope it is clear. If अगर तुम लोग को साइंस में कुछ प्रॉब्लम है तो I have made an integer song which is very very easy to understand. तो अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज go watch. It is very easy to understand the signs. साइन कैसे करना है, अभी यहाँ पे मैंने यूज किया -3 plus 2, तो बहुत लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है, राइट? सो प्लीज गो हैव अ लुक, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Okay, moving on to the next sum, question number 8. 49x minus 57y is equal to 172. 57x minus 49y is equal to 252. So first step is to give numbers to the equation. Second step, adding the equations. Let us add them. Let me put a plus sign here. Okay, अभी plus करते हैं. 49 plus 57 is 106, right? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है. सो अगेन इंटीजर सॉन्ग यहाँ पे भी यूज होने वाला है. सेम साइंस, एड एंड यूज द साइन ऑफ द बिगर नंबर. बड़ा नंबर इज दिस. तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? -106. समझा? Then 172 plus 252 is 424. Now what we are going to do, we are going to simplify this equation. We are going to remove this 106. So for that, we are going to divide the equation by 106 on both the sides. So when you divide, so this gets cancelled, this gets cancelled. अभी 106 है and here you have 424. You must not be aware of the table. So what you have to do is, अभी 6 के टेबल में just check the units place is 4. तो 6 के टेबल में units place 4 कब आता है? 6 4s are 24, right? So there are high chances कि 4 से if you do, you may get 424. And yes, this time 424, 106 4s is 424. You can check. So the answer is x minus y is equal to 4. Okay, this is the third equation. Now the next step is subtracting the equation. So let us subtract these two equations. Now while subtracting, we need to change the equation का sign. तो यहाँ पे 57 is having a positive sign. No sign मतलब positive, तो उसकी negative हो गया. ये negative है, तो I am going to change it into positive. And 252 is having no sign, which means I can add a negative sign to it. So 49 minus 57 is going to give you negative only because 49 छोटा है और 57 बड़ा है, right? तो आंसर देखो -8x है. 49 minus 57 is -8. Why? Because 57 is having a negative sign. Use the sign of the bigger number. Now let us see this one. -57 plus 49. ये जो नया साइंस है ना, उसको ही देखना है, पुराने साइंस को यू कैन फॉरगेट. सेकेंड इक्वेशन का, तो -57 plus 49 gives you -8 again. Different sign subtract. 57 minus 49 is 8. Use the sign of the bigger number. Bigger number is having a minus sign. 172 minus 252 is -80. Clear everyone?
अब यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगा? बिकॉज 252 is having a negative sign. Okay, use the sign of the bigger number. I hope it is clear. Let us move ahead. Abhi we are going to simplify this. So dividing both the equations by 8. So if you divide this by 8, minus x बचा. यहाँ पे if you divide by 8, 8 gets cancelled. Y बच रहा है. And here 8 ones are 8, 8 tens are is 80. And then you have a minus sign. So your answer is minus x minus y is equal to minus 10. This is your fourth equation. The final step is to add them, third and fourth. So let us write the equation and then I'll put a plus sign here. So plus x minus x, both are having different signs. So this gets cancelled. Minus y, same signs, add. So y plus y gives you 2y and use the sign of the bigger number. अभी bigger number नहीं है, it's having a common, both the numbers are same, तो common sign डालेंगे. So minus 2y. Okay, then 4 minus 10 is minus 6. Very easy. So let us see y का answer क्या आएगा. Okay, so if I take this 2 to the other side, so ये क्या होगा? Divide होगा. तो y is equal to minus 6 upon minus 2. Here also we can cancel minus का sign. So answer आएगा y is equal to 3. And then the next step is to substitute it in any of the equations. मैंने third equation लिया because it is easy. So third equation is x minus y equal to 4. So in place of y, I'm going to substitute 3 here. So x minus 3 equal to 4. So minus 3 है, when it comes to the other side वो क्या हो जाएगा? Plus हो जाएगा. So x is equal to 4 plus 3. So x का answer आएगा 7. Once you get, you can check whether your answer is correct or no. ये equation में ही check करो. x है 7, y है 3. तो 7 minus 3 is 4. Which means your answer is right. If you want to check in another equation, you can do that. Minus 7 minus 3. Minus 7 minus 3 is minus 10. Right? So which means your answer is correct. हम लोग solved example भी करने वाले हैं. So in solved example, third solved example देखते हैं. It is similar to what we done just now. So 15x plus 17y is 21 and 17x plus 15y is 11, right? So first step, writing the numbers to the equations and then adding the equations. So 15 plus 17, 32, 15 plus 17 again 32. 21 plus 11 is 32. Then बाद में क्या करना है? Dividing to simplify. तो divide करोगे तो क्या आएगा? X plus y is equal to 1. Now we need to subtract second and first equation. तो subtract करोगे तो 15 में से 17 गया, right? We are going to change the signs. 17 has having a plus sign, तो minus डाला. यहाँ पे भी plus है तो minus डाला. यहाँ पे भी plus है तो minus. तो 15 minus 17 is minus 2. 17 minus 15 is positive 2 and 21 minus 11 is 10, right? So again simplify, dividing the entire equation by 2. तो क्या आएगा? Minus x plus y, or 2 5s are 10 है तो 5, right? This is the fourth equation. Now let us add third and fourth equation. ये actually fourth होना चाहिए था, यहाँ पे fifth लिखा है, printing error. So third और fourth equation को वापस से हम plus करेंगे तो ये x कट हो गया. Y plus y 2y, 1 plus 5 is 6. So y का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा. And after substituting, they have taken the third equation. So x plus y is 1. तो y की जगह पे क्या डालना है? 3 डालना है. तो x plus 3 is equal to 1. 3 यहाँ गया तो minus होगा. तो 1 minus 3 is minus 2. बहुत ही easy था ये solved example. So I hope it is clear to everyone. Thank you so much for watching.